जनता पार्टी से आए हैं हम लोग और उन्होंने क्षेत्र में विकास किया अपने गुजरात के अंदर और आज मतलब एक सोच है कि सारा From door to door to aggressive campaigning, BJP workers are leaving no stone unturned in trying to sell the Modi dream. And one of the strategies adopted is in co-opting Dalits into the saffron fold. नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। A strategy devised months in advance and executed on the ground with military precision this summer to capture the crucial votes to add to the overall BJP kitty. The Dalits constitute about 17% of the total voters in the country. More than 50% of these vote for various regional parties. In Uttar Pradesh, the Bahujan Samaj Party has been able to hold on to the Dalit votes for some time now. The Congress has been trying to capture them back. But interestingly, this time around, it's the BJP that has been trying to quietly woo the Dalits to prop Modi to the top. हम ये सारा अपना जो चुनावी सफ़र है वो अनुसूचित जाति के बस्तियों में जाके, अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जाके, अनुसूचित जाति बाहुमूल्य क्षेत्रों में जाके, लोकसभा जहाँ जहाँ हैं देश भर में जो प्रमुख हैं, रिजर्व सीटें हैं या जो रिजर्व नहीं भी हैं, सामान्य सीटें हैं पर अनुसूचित जाति का मतदाता वहाँ स्थिति में है, इस स्थिति में है कि वो अगर अच्छे तरीके से मतदान करते तो भाजपा के उम्मीदवार वहाँ से भारी संख्या में जीत सकते, तो उसी सारी योजना से हम काम कर रहे हैं। देश के अंदर हम इतने सालों से कांग्रेस को सेंट्रल से जो भी हमें पॉलिसी मिलती है कि हमने जो मुद्दे हैं वो हम गली गली जा कर के लोगों को समझाते हैं कि भाई अब देश के अंदर क्या हो रहा है। देश में महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है, एजुकेशन की कमी है। आज स्कूल के अंदर अगर जाएँ, छोटे छोटे जितने भी स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, ज़्यादा फीस मांगते हैं और हमें अनुसूचित जाति लोग के वर्ग के लोग जो है इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। The idea is to wean the Dalit voters away from their traditional loyalties. And in UP it means taking votes away from the BSP, the flag bearer of Dalit aspirations. Reams of sheets dedicated to Bhimrao Ambedkar and Kanshi Ram, Dalit icons always associated with Mayawati's Bahujan Samaj Party. But this printing press is working overtime for the BJP. Posters of Dalit leaders, literature, pamphlets and booklets all being published here for distribution among BJP cadre and Dalit voters. अनुसूचित जाति के युवाओं में और अनुसूचित जाति के घर घर में भारतीय जनता पार्टी की योजना पहुंचे और मौजूदा सरकार में रही, लगातार पिछले 10 साल के कार्यकाल में रही और इससे पहले 50 साल का और कार्यकाल कांग्रेस जो निभा चुकी है, क्या क्या अनुसूचित जाति को हानि हुई है, छोटे से छोटे पहलू पर बड़े से बड़े इशू को हमने एक इस मटेरियल के माध्यम से 2-3-4 पेज का ये करके इससे पहले कि ये पुस्तिका के माध्यम से हमने तैयार किया। I in my chamber brought the photographs of Kanshi Ramji, Babu Jagjivan Ramji, K.R. Narayanan, along with Dr. Ambedkar. And these all 4 photographs were hanged, and in their presence I took the charge of my BJP SC Morcha office. Then I was asked by our leadership, I told them clearly, if we accept Patel Sahab in the fold of BJP, in the office of BJP, then why not Babu Jagjivan Ram? Why not Kanshi Ram? Already Ambedkar has been accepted by the BJP and some people very earlier. These pamphlets make several promises of assimilation of Dalits into the mainstream and their social and economic uplift. Promises of justice and dignity to the community through social, political, economic, educational and cultural means. Setting up a judicial commission to assess the economic status of the community.
with promises to fill all vacant positions reserved for SCs in a time-bound manner at the central and state level, and to take adequate measures to stop the diversion of funds meant for SCs. There's also literature like this that has been written by the head of the SC/ST cell of the BJP. This literature pits the minorities against the Dalits. The BJP's desperate attempts at trying to project itself as the upholder of Dalit rights as opposed to other parties that believe in minority appeasement. The BJP's PM nominee Narendra Modi also makes it a point to drive the point across in the speeches that he makes in Dalit relevant constituencies or on dates relevant to them. बाबा साहब आम्बेडकर ने जन्म लेकर के भारत के दलित, पीड़ित, शोषित सबको न्याय दिलाने का एक भगीरथ काम किया था. At Ambedkar Jayanti, the material circulated at the party headquarters accused Sachir Committee and Ranganath Mishra Commission of helping the UPA government curtail benefits to scheduled castes. अगर दलितों से ध्यान हटा है कांग्रेस का और यूपीए सरकार का, तो इनकी पूरी क्षमता इन लोगों ने एक मुस्लिम वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के नियम के अपेक्षा के तहत लगा रखा था. मुस्लिम वर्ग को जितना प्रश्रय दिया गया, सारी चीज़ें दी गई, उतना प्रश्रय अगर दलित समाज को भी मिला होता तो ये अच्छा संदेश होता. But the BJP is also finding it hard to build an image as a pro-Dalit party. It does not even have its own Dalit icons to boast of. So it is being forced to adopt Dalit leaders from other parties. Such is the crisis that the likes of Kashi Ram, the founder of Bahujan Samaj Party, and Babu Jagjeevan Ram of the Congress surprisingly adorn the walls of BJP headquarters SC/ST cell. The head of the cell, Sanjay Paswan, has also penned booklets about both the leaders. BJP believes that a 10% increase in vote percentage from what it got in 2009 will propel it to the centre. And that's where the Dalit votes come into play. In 2009, the BJP got 12% of Dalit votes, which was only 2% of the total votes. But its aggressive bid during last year's assembly elections saw it getting 69 out of 79 reserved seats in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. All three states were won by the BJP. This has given confidence to the party about its Dalit strategy. उत्तर भारत में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 70-80% सीटें आरक्षित सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगी. The BJP's thrust is not just limited to Uttar Pradesh but elsewhere too. In states like Bihar, leaders have been visiting Dalit homes and spending time with them. In Bihar, after 90, it was totally OBC discourse was there. And in and around the OBC, entire Bihar politics used to revolve. For the very first time, after 2 decades almost, now Dalit discourse have come up. And now entire politics is going to revolve around Dalits or Mahadalit. भाई सुशील मोदी जी, आपके ऊपर में पूरा देश का निवाह है. ये गरीब गुरबा लोग आपकी ओर देख रहे हैं. ये दलित पिछड़े लोग आपकी देख रहे हैं. The party has also gone in for strategic alliances. Getting Ramvilas Paswan into the NDA fold again was not just a shot in the arm for Modi, but the party also hopes to wean away Dalit voters from RJD and Congress. सब लोग मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को ताकत दीजिए. इस बार मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरा का पूरा तमाम 18% वोट बैंक जो है वो पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन को जाएगा. The party is also using Modi's backward status to strike a chord with the Dalits. गांव की समस्या की भी चर्चा हो. नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, तो निश्चित रूप से उस पिछड़े वर्ग के साथ उसकी जो पूरी भूमिका है, और मैं कहूं
कि इस चुनाव की जो नींव रखने का काम कर रहा है वो अनुसूचित जाति वर्ग है, वह दलित वर्ग है। The Dalits traditionally voted for the Congress party, but the rise of the Bahujan Samaj party yanked away this community from the grand old party. So while the BJP is trying to strategically make inroads into the community, let's take a look at whether the Congress and the BSP are trying to counter the move, if at all. अवधवासी रामचंद्र को नर से बनाया नारायण, चित्रकूट में राम रहे, बादा में पांडव लील शरण, बुंदेलखंड बुंदेलों की लड़झेलों की रही यही यमन। There are 66 different types of Dalit castes in the state of Uttar Pradesh, comprising of 21% of the electorate. While the duo of Mayawati and Kanchi Ram have traditionally continued to dominate over the Dalit vote, the BJP this time has fielded Uma Bharti from the constituency of Jhansi. So can Uma Bharti's Lord community status, clubbed with her Hindutva image, clubbed with Narendra Modi's OBC status, win the Dalit vote for the BJP in the state of Uttar Pradesh? Perceptions in politics may not be as important as reality, but they sure play a crucial role in shaping political realities. Voters, and mainly those who are fence-sitters, rely heavily on this perception, rely heavily on the direction in which the wind is blowing. And that's the wind the BJP is banking to ride on, to woo the Dalit voter. The BJP has made a concerted effort to woo Dalit voters, especially in Uttar Pradesh, and do you think that your persona has added to that? I think we decided not to fight elections on casteism. But when people came to know that Narendra Modi belongs to an OBC caste, after that definitely there is an impact. You know, we've been touring the Jhansi constituency since yesterday, and there has been this sentiment that people who are unhappy with Mayawati now want to vote for you, they want to vote for the BJP. Yes, because this is the first time, as I'm feeling, since I'm in politics, that the election is focused on the needs of people. And they believe that their problems will be sorted out only by Narendra Modi. There's it's very strange kind of blind faith in him. And that is in Dalit, in OBC, and upper caste, educated everywhere. But can the blind faith of the Dalit voter in the Bahujan Samaj party be moved by the wave of development politics? In the Dalit bastis in Jhansi, the real bastions of the BSP, the Dalit voter seems unperturbed, unfazed, and their loyalty unmoved by any perceptive wave that may threaten to sweep the world outside. देखो ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादातर तो बीएसपी की लहर है झांसी में, ख़ास तौर से मायावती की ख़ास तौर से यहाँ पे लहर है, तो मेरा वोट तो वैसे बीएसपी पे जाएगा। और लहर वाली बात अब देखो जिसकी वजह बन जाए, साप आने नहीं चाहिए। भले बीजेपी आ जाए चलेगा, बीजेपी आए चलेगा, बीएसपी आए चलेगा, सापा नहीं आने चाहिए और कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। मायावती का गढ़ हैगा, हरिजन मोहल्ला है, इसीलिए सब मायावती को वोट देता। वो गरीबों की मसीहा है वो तो, क्योंकि शुरू से उसी को चाहते हैं मायावती को, इसीलिए उसी को वोट देते हैं। ये तालपुरा है, बीएसपी का गढ़ है ये, इसलिए यहीं से वोट जाएगा। हम हिसाब से बीएसपी को चाहते हैं सब। अब नरेंद्र मोदी की कह नहीं सकते कि वो कहता है कि दंगे फसाद होंगे उसी सरकार पे, ऐसे कोई मानते ही नहीं है।
इसलिए तो हमारा वोट बीएसपी को है। ये जो मायावती कर रही हैं, मायावती अच्छा कर रही हैं और मायावती से हमें कोई शिकायत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी हो, कोई वर्ग का आदमी हो, उसको सबको मकान दिए उसने बहुत सहायता दी है। हम तो बीएसपी को देंगे बहन जी। मोदी की लहर नहीं है यहाँ। मोदी की लहर कहाँ है? मोदी कहाँ, गुजरात के रहने वाले हैं। In the year 1984, the Bahujan Samaj Party was established to tap into India's lowest caste, the most loyal vote bank of the Dalits. Kanchi Ram ensured that the word Dalit became a part of the vocabulary in India's most socially regressive areas. And today, Mayawati is seen as a Dalit icon, a messiah fighting for Dalit emancipation. The city of Jhansi and the story of Jhalkari Bai that we're about to tell you has played a crucial role in the image building of the BSP. Jhalkari Bai was a soldier in the army of Rani Lakshmi Bai and impersonated the Queen herself so that Lakshmi Bai could escape being taken into custody by the victorious army of the English East India Company. Jhalkari Bai was a Dalit, born into a Kori family. The story of her valor and sacrifice became a huge symbol to unite the Dalits and draw them towards the BSP. स्कूल बनाए, पार्क बनाए और ये तमाम जगह जगह मूर्तियाँ लगवाई झलकारी बाई की कि ये वीरांगना है, ये जो है पूजनीय है। तो हमारे वीरों का इतिहास को उजागर किया मायावती कांसीराम जी ने। The Congress party has to completely transform itself. The Dalit vote bank, once a Congress stronghold, is perhaps the hardest for the Congress to win back. The Gandhis refrain from holding caste gatherings in order to avoid alienating its urban vote base, but have tried to back the Dalit voters by gestures, by a perception that the Dalit is slowly but gradually gravitating towards the Congress. We travelled to the Medki village and met the Dalit family with whom the Gandhi science sat down and had a meal. आए और उन्होंने है जो शाम के 6-6:30 के बीच में चौपाल लगाई स्कूल के पास और सारे गांव में चक्कर लगाया। बिजली तो कमाऊ साहब, बिजली तो कमाऊ, लेकिन जो पानी के तल के पानी के बारे में बुंदेलखंड में वह योजना केंद्र से आई, वो बहुत चल रही है। अभी तक कांग्रेस झांसी जिला में एक बेर आई जनता पार्टी की सीट और सन 65 से कांग्रेस चली जाए विधायक और सांसद की। अब और आगे हम कुछ नहीं कह सकता, आगे चाहे जैसे हो जाए भविष्य की बात कौन बता दे। While Kunji Lal's allegiance to the Congress is untouched by any anti-incumbency, others in Medki village are disillusioned with the Congress, angry at being left behind in the march of progress, hopeful of development and wanting of something more than just hollow rhetoric. In the Medki village, there are still no roads, barely any power supply, nothing in the name of healthcare, and a terrible state of the farmers who've been devastated this year by a bad crop. So our Rahul Gandhi strategically planned symbolic gestures of having a meal with the Dalit family enough to win voters in this region, or does the electorate now demand more? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। उनके केवल आए यहाँ और आके चले गए। बताओ बरसात में मकान गिर गया है, दुनिया की भी आए, लेकिन हमारे मकान को कुछ नहीं है। बताओ थोड़ी सी जगह हम 2 बच्चे पढ़ाएंगे, क्या अपना काम करेंगे, क्या क्या करेंगे, मकान बनाएंगे। परेशान चल रहा है, सब लोग चल रहे हैं, हमें क्या चल रहा है। अरे राहुल गांधी तई बैठे पी पाता है, कुछ नहीं किया गया, रात भर पाई है और भाग गए। वे तो सब उनको समझ में नहीं आऊगी भाई कहो का चाहूँ। सब हर जन जैसे थे वैसे ही है, ना तो किसी को नौकरी मिली, ना किसी को रोजगार मिला, ना हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हैं, ना कोई स्कूल अच्छा है, ना दवाई की कोई व्यवस्था है, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ वो आए थे तो हम लोगों ने कहा था कि आप गुप्त ना आके और खुले आते तो कुछ सड़क अड़क का कुछ काम हो जाता। तो वो राज्य सरकार के ऊपर थोपते रहे कि हम पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार काम नहीं करती है, बस यही आरोप लगाते रहे, वो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उन्होंने। सरकार तो मोदी की बनेगी। हाँ हाँ, मोदी की लहर है पूरे बुंदेलखंड में।
यहाँ कोई और पार्टी नहीं आई है, ना कोई ने विकास किया है। रोड ऐसी, फसल ऐसी डरी, किसान लोग परेशान हैं, वो पाए गए, कोई किसी ने नहीं किया है। मायावती को मिलेगा दलितों का और दलितों को देंगे, और अगर जो अपने दलित की छोड़ करके जाएंगे तो सीधे बीजेपी को देंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस की सरकार इस तरह हिसाब से नहीं रही है। प्रदीप जैन का खुद फैक्टर था, वो गांव-गांव में सब जगह मिले, सबके लोकप्रिय थे, इसलिए प्रदीप जैन की जीत हुई थी। उसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं था। प्रदीप जैन जी जो है यहाँ कितनी बार आए? नहीं, एक नहीं आए, एक बार आए। नहीं, राहुल के साथ आधे फिर नहीं आए हैं। The sentiment at Medki raises some serious questions about the ability of the Congress to win votes with its pro-poor image. The biggest advantage of the Congress over the past decade has been its ability to mean different things to different people, irrespective of the paradoxes that may be. That ability is now shrouded with doubt, serious doubt in the minds of the voter. A doubt first exploited by the formidable Kanshi Ram when he forged a political identity for the Dalits that was later consolidated by Mayawati. The BSP marshaled the Dalits into one cohesive vote bank. The fluttering blue flag and the elephant mascot trumpeted the Dalit pride, to the extent that the Dalit became almost synonymous with the BSP in the potboiler of Indian politics. But that domination of Dalit championship is now under threat, as chipping away at their sentiments is the juggernaut of the Modi campaign. Proving once again that votes in India can be canvassed and blocked. Because the reality of the Indian democracy is that while the vote is individual, the concerns remain communal. So does politics, practiced in the world's largest democracy.